Hello friends, in this video I will focus on the factor affecting the rate of reaction. Also focus on the Arrhenius equation. The first factor, concentration. We know that according to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to concentration of the reactor. Concentration is increases, rate of reaction is also increases. But at a given temperature, concentration may change but रेट कांस्टेंट नेवर चेंज। तो दोस्तों रेट कांस्टेंट ये कांस्टेंट होता है अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया गिवन टेम्परेचर को तब भी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। साइज, द साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल आर मोर देन रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस। अगर दोस्तों साइज पार्टिकल की कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। The next factor, temperature. In this case, if temperature is changed, the rate of reaction as well as rate constant is also changed. So if temperature increases, the rate of reaction is also increases and rate constant is also increases. The relationship between increase of rate constant with previous rate constant is defined by Van Hoff, and this is called Van Hoff rule. What is a Van Hoff rule? It is a ratio of rate constant at temperature increases in integer multiple of 10 times to that of previous rate constant at a given temperature. So for gamma raised to n is called as temperature coefficient. Friends, such a law is applicable only for low temperature. But how will you determine the rate constant at higher temperature? This can be done one of the famous scientists that requires Arrhenius, and this requires Arrhenius equation. The Arrhenius equation are available in different forms. The first form, that is called differential form. The derivative of ln of k with respect to temperature equal to EA upon RT square. The second form, that is the exponential form. The k equal to capital A raised to minus E upon RT. ln of k equal to ln of A minus E upon RT. Log of k to minus log of k1 equal to E upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2. Friends, what is of EA? EA is the energy of activation. It is a minimum amount of energy of a reactant molecule must acquire before they could react. दोस्तों, रिएक्शन होने के पहले रिएक्टर मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, हाउ इट गो टू द एक्साइटेड स्टेट, और जो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्सॉर्ब करता है वही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब all reactor molecule cannot be participated in the reaction. Only those molecules participate in the reaction which can be absorb the energy. Such a energy is called as energy of activation. K is a rate constant, T is a temperature, I is a gas constant, A is a frequency factor. It is also called as Arrhenius constant. Now, let us discuss the proof of such a types of equation. The first, differential equation. Consider reaction A to B. The rate of reaction with respect to product B, that is dCB upon dt. Therefore equal to K into CA. Consider equation number 1. Now, at a given temperature, according to Maxwell-Boltzmann distribution law, a definite number of molecules of the total molecules in the reaction mixture possess energy equal or greater than the energy of activation. Only such activated molecules are reactive
Therefore, consider the reactant A. It is absorb the E amount of energy. Let it go into the excited state. That will become activated, and this activated compound convert into product B. Therefore, A dash is activated complex. Now, from above reaction, the first step take place in equilibrium. For equilibrium, the equilibrium constant Kc equal to concentration of activated complex A star upon concentration of reactant A. Therefore, Ca star equal to Kc into Ca. That is considered as equation number 2. Therefore, according to Van of Isochord. दोस्तों, वैन ऑफ एसोकोल नाम का एक साइंटिस्ट था. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिलेशनशिप उन्हें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में प्रूव की है दोस्तों. वो इक्वेशन क्या था सर दोस्तों? वो डी एल एन के सी अपॉन डी टी इक्वल टू ई अपॉन आर टी स्क्वायर. यहाँ आप देख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ एल एन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इक्वल टू ई अपॉन आर टी स्क्वायर. इस इक्वेशन को हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करते हैं दोस्तों. रेट इक्वल टू आपको रिएक्शन करें क्या होना चाहिए दोस्तों? द चेन ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट इनटू सी स्टार. क्योंकि सी स्टार दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसके जितने मॉलिक्यूल होंगे उसके प्रोपोर्शन में रेट ऑफ रिएक्शन होता है दोस्तों. एंड दिस प्रोपोर्शन इज कांस्टेंट कंसिडर्ड एज कांस्टेंट एंड दैट इज सी स्टार. देयरफॉर रेट इक्वल टू कांस्टेंट इनटू Kc इंटू सी. इक्वेशन नंबर जो में दो वैल्यू दिखाई देते सी स्टार की, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट की है दोस्तों, और हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल गया है दोस्तों. कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4. दोस्तों इक्वेशन नंबर क्या था? रेट इक्वल टू K इंटू सी. इक्वेशन नंबर 4 क्या दोस्तों? कांस्टेंट इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू सी. दोस्तों यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो गया, सी से सी इक्वल हो गया. तो दोस्तों K इक्वल टू क्या होना चाहिए? K equal to constant into Kc. K is a rate constant, then equal to constant, and Kc is equilibrium constant. Therefore, take the log of both sides. Ln of K equal to ln of constant into Kc. Therefore, ln of constant into ln of Kc, that will become ln of constant plus ln of Kc. Therefore, take the derivative of both sides. Therefore, derivative of ln K upon dt equal to derivative of ln of constant प्लस डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ Kc अपॉन dt. दोस्तों यहाँ जो कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों? 0 आता है. और यहाँ dln K अपॉन dt इक्वल टू dln Kc अपॉन dt. ये दोनों क्या हो गए दोस्तों? इक्वल हो गए. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस दैट इज dln Kc अपॉन dt इक्वल टू dln K अपॉन dt इन इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन नंबर 3 becomes dln K अपॉन dt equal to dln Kc upon dt, and such equation is called as differential forms of Arrhenius equation. दोस्तों अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इक्वेशन हम प्रूव करते हैं. इक्वेशन क्या दोस्तों? K equal to A e raised to minus e upon RT according to maximum Boltzmann distribution law. The number of particles present in the excited state that requires NaEm and total number of particles that is Nt equal to E minus e raised to minus e upon RT. Therefore, what is the value of Na? Nt go into the numerator, that is become Nt into e raised to minus e upon RT. दोस्तों rate of reaction is directly proportional to the number of particles which are present in the excited state. Therefore, it is called activated complex. Therefore, rate equal to A into Na. Therefore, rate of reaction equal to what is the value of Na from equation number 6? Nt into e raised to E upon RT. Therefore, rate equal to N. Nt means total number of molecules.
that is also called as initial concentration Ca. E is to minus E upon R T. दोस्तों, therefore rate equal to K into C A from equation number 1. So compare equation number 1 and equation number 7. Rate equal to rate, Ca equal to Ca, therefore K equal to A into E raised to minus E upon RT. That requires exponential forms of the Arrhenius equation. दोस्तों, ग्राफिकल मेथड से Arrhenius equation हम कैसा यूज कर सकते हैं? दोस्तों, यहाँ हमें देखा है डिफरेंशियल फॉर्म का इक्वेशन dln k upon dt equal to E upon RT square. Therefore, dln k equal to E A upon RT square into dt. Therefore, taking the integration of both sides because we want the equation. Therefore, the integration of dln k become ln of k equal to E upon R is a constant out of the integration. The remaining is integration of dt upon t square. Therefore, ln of k equal to E upon R. The 1 upon t square is also written t raised to minus 2 into dt. Therefore, ln of k E upon R in the bracket t raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus ln of a. Ln of a is a integration constant. Therefore, minus 1 t raised to minus 1 come into the denominator, that it become plus 1. And this minus sign as it is. Therefore, ln of k equal to E upon R minus 1 upon t plus ln of a. दोस्तों, अगर ये माइनस साइन बाहर आती है तो माइनस E upon R into ln of 1 upon t plus ln of a. दोस्तों, if we have plot the graph of ln of k versus 1 upon time, so that it gives the straight line, the slope equal to minus E upon R. And this line is extrapolated, then it is intercept along the y-axis, and such an intercept equal to ln of a. इस तरह से दोस्तों ग्राफिकल फॉर्म में हम आर्नियस इक्वेशन का स्टडी कर सकते हैं. अगर हमने ये ग्राफ प्लॉट किया दोस्तों अलग अलग टेम्परेचर को, तो दोस्तों हम कौन से भी टेम्परेचर को रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम यहाँ ले सकते हैं इसकी. दोस्तों, एनालिटिकल फॉर्म में आर्नियस इक्वेशन कैसे यूज करते हैं? दोस्तों, यहाँ सेम हम डिफरेंशियल फॉर्म लेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम इन द लिमिट ऑफ 1 to 2. Therefore, in the integration of in the limit of 1 to 2, dln k equal to integration of in the limit of 1 to 2 a upon RT square into dt. Therefore, n of in the limit of 1 to 2, n of k in the limit of 1 to 2 equal to a upon R integration of 1 to 2 dt upon t square. Therefore, n of k to minus n of k1 equal to E upon R integration of 1 upon t square become t raised to minus 2 into dt. Then n of k to minus n of k1, that is nothing but the n of k2 upon k1 equal to E upon R t raised to minus 1 upon minus 1, that is obtained from the integration of t raised to minus 2 in the limit of 1 to 2. Therefore, n of k to minus n of k2 upon k1 equal to E upon R minus 1 upon t in the limit of 1 to 2. Therefore, apply the higher limit minus lower limit. Therefore, this equation become n of k2 upon k1 equal to E upon R in the bracket 1 upon t2 minus in the bracket minus 1 upon t1. Therefore, n of k2 upon k1 E upon R minus 1 upon t2 minus minus become plus 1 upon t1. Therefore, n of k2 upon k1 equal to E upon R. दोस्तों, यहाँ हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है. डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए फर्स्ट टर्म को हम t2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म को हम t1 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो, फर्स्ट टर्म t2 minus t1 upon t1 t2 and remaining as it is. Therefore, log to the base c converted to the log to the base 10 by multiplication of 2.303. Therefore, this 2.303 go into the denominator in the right hand side. Therefore, that will become log of k2 upon k1 equal to E upon 2.303R t2 minus t1 upon t1 t2.
दोस्तों ये जो इक्वेशन है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन because with the help of this equation we have determined the rate constant at any temperature. If rate constant data is given at a particular temperature, so let us discuss some problems on this equation. The temperature coefficient for reaction if K35 upon K25 is 1.82. Calculate the energy of activation in calorie. That is given 2 calorie per mole per degree. दोस्तों टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है ये हमने देखा है. दो अलग अलग टेम्परेचर को रेट कांस्टेंट का जो रेशो होता है उसे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं. मतलब यहाँ टेम्परेचर K35 दिया है दोस्तों, यहाँ टेम्परेचर 25 दिया है, उसका रेट कांस्टेंट दिया है दोस्तों, उसका रेशो जो आता है वो 1.82 होता है. तो टेम्परेचर K35 जो है दोस्तों 35 को हम T2 कंसीडर करते हैं और 25 को हम T1 कंसीडर करते हैं. देखो T1 इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 25 प्लस 273 केल्विन दैट इक्वल टू 298 केल्विन. Similarly, degree Celsius equal to Kelvin by use of 273 in the 35 that will become 308 Kelvin. By putting the all value in the Arrhenius equation, the Arrhenius equation is log of K2 upon K1 equal to E upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2. आप लोग को यहाँ दोस्तों ये की वैल्यू निकालने की है. तो दोस्तों ये की वैल्यू निकालने के लिए हमें मैथमेटिक्स के जरिए सॉल्व करते हैं. अगर मैथमेटिक्स के जरिए हमने ये सॉल्व किया तो ये इक्वल टू 2.303 R in the bracket T1 T2 log of K2 upon K1. अभी यहाँ सब हम वैल्यू पुटअप करेंगे दोस्तों. पुटअप करने के बाद 2.303 R की वैल्यू 2 है, T1 की वैल्यू 298 है, T2 की वैल्यू 308 है अपॉन 308 माइनस 208 log of K2 upon K1 हमें दिया है 1.80. दोस्तों ये आ गया आंसर 10966 कैलोरी पर मोल. अगर इसे हमें किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना होता है दोस्तों 1000 से हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा. देखो ये इक्वल टू 10.966 किलो कैलोरी पर मोल. इस तरह से दोस्तों हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालते हैं दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं. द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ सर्टेन मॉलिक्यूल इज 10 किलो कैलोरी पर मोल एट 27 डिग्री सेल्सियस. दोस्तों यह एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमें दी है. इफ द रेट कांस्टेंट of the reaction is K. Rate constant को यहाँ K बताया दोस्तों. What will be the temperature? The rate constant become triple. कौन से टेम्परेचर को जो रेट कांस्टेंट है वो 3 टाइम्स में हो जाएगा दोस्तों. मतलब फर्स्ट रेट कांस्टेंट हमें दिया है दोस्तों K1, तो सेकंड रेट कांस्टेंट K2 over 3K1 होना चाहिए दोस्तों. तो वो टेम्परेचर हमें डिटरमाइन करना है. तो हमें T1 दिया है दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300 केल्विन होता है दोस्तों. T2 होता है दोस्तों, हमें वो निकालना है. ये हमें दिया है दोस्तों 10 किलो कैलोरी पर मोल. दिस कैन बी इक्वल टू कैलोरी पर मोल बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1000 दैट विल बिकम 10000 कैलोरी पर मोल. R इज आल्सो गिवन 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री. दोस्तों हमें पता है आर्नियस इक्वेशन log of K2 upon K1 ये upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2. यहाँ T2 की वैल्यू करना है. इसे बाकी के सब टर्म्स हम एक सेकंड से कर सकते हैं दोस्तों. हम यहाँ वैल्यू डाल देंगे. K2 upon K1 ऊपर क्या हो गया दोस्तों, K2 की वैल्यू 3K1 है upon K1 इक्वल टू ये upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2. K1 ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों. यहाँ log of 3 आ जाएगा. ये की वैल्यू हमें 10,000 दी है दोस्तों upon 2.303 into 2 T2 minus 300 upon T1 means 300 and T2 is T2 as it is. हमें वो निकालना है दोस्तों. तो दोस्तों ये हम जब मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं तो T2 की वैल्यू आती है 321.2 केल्विन. इस तरह से दोस्तों हम टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं उसका करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट अगर हमें दिया हो तो. तो दोस्तों आर्नियस इक्वेशन इज द मोस्ट यूजफुल इक्वेशन to determine the rate constant at a particular temperature. It is also useful to determine the energy of activation. It is also useful to determine the rate. Determine the
temperature, at that temperature what will be the rate constant. दोस्तों, in a reaction of nitric oxide, 50% of reaction was completed in 108 seconds when initial pressure was 336 mmHg and in 147 seconds when initial pressure was 288 mmHg. Find the order at the reaction. दोस्तों, हमें यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है. हमने पिछले वीडियो में देखा दोस्तों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है वो मोस्ट यूजफुल है दोस्तों. इस प्रॉब्लम में हमें 50% रिएक्शन दिए दोस्तों, मतलब हमें हाफ लाइफ दिया दोस्तों. 50% रिएक्शन 108 सेकंड में कंप्लीट होती है. तो हमें यहाँ दोस्तों 50% रिएक्शन की इंफॉर्मेशन दी है. अगर प्रेशर 336 होता है तो रिएक्शन 108 में 50% कंप्लीट होती है दोस्तों. अगर दोस्तों प्रेशर 288 होता है दोस्तों तो रिएक्शन 147 सेकंड में कंप्लीट होती है दोस्तों. मैं हमें यहाँ 2 हाफ लाइफ टाइम दिए होगा. तो हम पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं दोस्तों. द फर्स्ट हाफ टाइम फॉर फर्स्ट रिएक्शन T half 1 equal to 108 second. At that time pressure that also considers the activity 336 mmHg. After time or at T half for second reaction 147 second is required for 50% reaction is completed. At that time the pressure is 288. That is also called activity. Therefore this is considered as A2. Therefore the determinants of the order of reaction which can be done by the following equation. N equal to 1 plus log of T half for first reaction minus log of T half for second reaction upon activity for second reaction, log of activity for second reaction minus log of activity of first reaction. इस फॉर्मूले में अभी सिर्फ हमें वैल्यू डालना है दोस्तों. A मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. तो N equal to 1 plus log of T half फर्स्ट रिएक्शन का 108 दिया है दोस्तों. लॉग ऑफ सेकंड रिएक्शन का हमें 147 दिया है. अपॉन लॉग ऑफ सेकंड रिएक्शन की एक्टिविटी हमें 288 दी है दोस्तों. हम फर्स्ट रिएक्शन की एक्टिविटी लॉग ऑफ 336 दिए दोस्तों. ये हम सॉल्व करते तो ये लॉग की वैल्यू आती है दोस्तों 2. तो 1 plus 2 दैट विल बिकम 3. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3 दोस्तों. इस तरह से हमने केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक खत्म किया है. इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिए दोस्तों. कुछ एग्जाम्पल बाकी होंगे जैसे कि K1 हाउ डिटरमाइन द K1, K2, K3. इसके ऊपर हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों. मैं उस वीडियो में ये कंसेप्ट क्लियर करूंगा. लेकिन एज ए पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमने लगभग इसमें का बेसिक केमिकल काइनेटिक्स सभी कवर कर लिया है दोस्तों. तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी. थैंक यू सो मच and take care.